Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Hima Gupta and today I am going to start new topic which is MPS-003 India Democracy and Development. If you have not covered MPS-002, so you can cover it and I will provide the video lecture and the playlist link in description. So let's start. This is MPS-003 all the important question. So today I will cover this unit number 27, and democracy and development in India. So I will cover in this video all questions like democracy and interest group, ongoing debate on democracy and development in India, evolution of political democracy and economic development in India, and performance of democracy in India in the last 6 decades. So, if you have seen the topic of this, these questions is democracy and development. Okay, so let's start. Or let me discuss other important questions such as impact of new media technology on democracy and development, role of media in shaping public policies and public opinion. Then unit 21, which is regionalization of Indian politics and implications for economic policies, describe the phenomena of regionalism in India. Then unit 20 के these five or six नहीं, sorry, this is five questions. So make a critical assessment of women in development approach, analyze the approach of development and their contribution towards the uplift of women, then analyze the paradigm shift from women in development to gender and development. How to development bring about a positive changes in the status of women. Then this state and women development. State women and development. Okay. Then next topic will be civil society, social movement, NGOs, and voluntary action. Critically evaluate the role of civil society in the era of globalization. Then discuss the changing notion of civil society and critically analyze the role of new social development in the era of globalization. Then we will cover the unit 19, human development, like discuss a basic minimum needs approach towards the human development and how do fundamental rights and DPSP and ensure human development explained. Then describe the evolution of religious politics in India and its consequences. And the last unit will be this, the legal system and judiciary. And the question will be relationship between judiciary and executive in India and the role of parliament in Indian politics. So अभी हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे यूनिट 27 के. ओके, so this is the democracy and interest group. So what do you understand by interest group? Let's understood it in this structure. See, as we know, देखो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना. So the citizen of India with common interest, like for example there are some students, there are some farmers. Okay, तो ये फार्मर और जो स्टूडेंट्स हो गए, इन सबके एक कॉमन इंटरेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, है ना. एंड यू इफ यू अवेयर अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट, सो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कॉमन इंटरेस्ट. जब कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब ये प्रोटेस्ट होता है ना. तो
इस जैसे प्रोटेस्ट होता है वैसे ही एक इंटरेस्ट ग्रुप भी डेवलप होते हैं। तो सिटीजन्स जिसके कॉमन इंटरेस्ट है वो फॉर्म करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन, एनजीओज, फार्मर ग्रुप, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये इस तरीके से इंटरेस्ट ग्रुप डेवलप होते हैं। जब ये इंटरेस्ट ग्रुप डेवलप होते हैं तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग लॉज, पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट डिसीजन। और यू कैन से दैट कि इंटरेस्ट ग्रुप आर जो इंटरेस्ट ग्रुप है दे इन्फॉर्म द ओपिनियन एंड डिमांड ऑफ द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज लॉज बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। अब जो भी ये लॉ पॉलिसीज बनाते हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं सिटीजन्स को। तो इस तरीके से सर्कल ये सर्कल दिखता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप एंड डेमोक्रेसी। तो एग्जाम में अगर आप ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के आएंगे, जस्ट ऐसे डायग्राम आपको बनाना है, इसको बॉक्स में कवर करना, ठीक है। तो इससे तो हम समझ गए कि व्हाट इज इंटरेस्ट ग्रुप एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप एंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी हमें पता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल एंड रूल फॉर पीपल। तो पीपल रूल कैसे करेंगे? थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। लाइक ये दिस इज द इंट्रोडक्शन। Democracy is not limited to election alone. Okay, this is what do you understand by democracy? तो democracy को अगर कोई explain करे तो they are thinking like democracy जिसमें election हो, है ना। तो this is not limited to the election alone. It also depends on active citizenship where interest group plays a vital role. तो जैसे हमने देखा interest group कैसे important role play करते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह आज के टाइम पे हो रहे हैं, जैसे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट होते हैं, फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। और अगर कॉमन इंटरेस्ट मिल जाए तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है। तो प्रोटेस्ट करता कौन है? तो ये हमारे इंटरेस्ट ग्रुप, है ना। देन हम इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैंने जैसे आपको बाकी वीडियोस में बताया है कि जब हम स्कॉलर्स के नाम मेंशन करते हैं तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हमें मार्क्स दिलवाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट दहाल, देखो रॉबर्ट दहाल जो है ना वो मतलब डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। तो यू कैन मेंशन हिज नेम, ओके। According to Robert Dahl, modern democracy functions through the multiple organized groups that influence policy making and ensure representation of diverse social and economic interests. जो भी चीज आपने समझी है ना वही चीज रॉबर्ट दहाल ने भी बोला है कि हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है? थ्रू दी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स थ्रू दी लाइक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियन, एनजीओज, फार्मर्स ग्रुप, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कवर एंड यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट इंटरेस्ट ग्रुप। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन डेमोक्रेसी? तो डायग्राम से इतना तो आप समझ गए कि क्या रोल है, कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग को, है ना, पॉलिसी एंड लॉज ऑफ द और एंड द गवर्नमेंट डिसीजन। तो इस तरीके से आप और भी पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, है ना। तो अब हम देखते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। They give voice to the different sections of the society and help bridge the gap between citizens and the government. Then the second point is influencing the policy making. They use lobbying, campaign, public pressure, or you can say protest to provide expert knowledge to the policy makers. Then the third point is political education. Spread awareness about the rights, policies, and the issues, and they help citizens to become politically conscious. Then fourth point is check on government power. Act as a watchdog.
and prevent misuse of power and ensure accountability. Then promoting the participation, encourage people to actively engage in democratic process. तो these are very common points जो कि आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो और इससे आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? Then the challenges created by interest group. What are the challenges created by interest group? For example, I think I have mentioned, yeah, this is भ्रष्टाचार or corruption, unethical practices, है ना? Inequalities of the power. Not all groups have equal resources. Business and corporate groups dominate over the weaker sections, and this may lead to the unequal representation. Then then the promotion of narrow interest, focus on self interest rather than national public interest. They can harm the broader societal welfare. Then the distortion of the public policy making. Policies may be influenced by pressure tactics and lobbying and results in the biased or skewed policies. Then weakening of democratic institutions means excessive pressure can reduce autonomy to the legislature and executive. Social conflicts, fragmentation, combating the interest can create tension. Okay, it can create tension. अब now this is the conclusion. तो मैंने सभी क्वेश्चन में एमपीएस 0022 के अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था अगर आप कंफ्यूज हो कि कंक्लूड कैसे करें आंसर को तो जस्ट राइट द समरी ऑफ द योर आंसर. ओके अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वरना लाइक सिंपल जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है अगर आपको ये इंट्रोडक्शन याद है तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल while the interest groups are essential for the representation, unchecked influence can direct or distort democracy. Therefore, there is a need for regulations, transparency, and accountability to balance their role. Okay, then हम next topic start करेंगे. एक मिनट या शायद मैं टॉपिक का नाम लिखना भूल गई. एक मिनट. So this is the topic is ongoing debate on democracy and development in India. तो अब हम देखेंगे debate on democracy and development. Yeah. So this will be the introduction like this. The relationship between democracy and development in India has been a subject of continuous debate among the scholars and policymakers. While democracy emphasizes participation, democracy, this is which is emphasizes the participation, accountability, protection of the rights. Development focuses on economic growth, efficiency, and welfare. In the Indian context, the challenges see थोड़ा सा confusion हो गया. The relationship between democracy and development in India has been a subject of continuous debate. तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो पूछी है क्वेश्चन में उसी को हमने इंट्रोडक्शन में यूज कर लिया. एंड देन हमने बताया कि डेमोक्रेसी विच इज emphasizes द पार्टिसिपेशन अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स whereas development which is focusing on the economic growth efficiencies and the welfare. In the Indian context, the challenges lies in the balancing democratic processes with the needs for rapid and inclusive development, leading to differing views on whether democracy facilitates or hindered development. So यहाँ पे मैंने डेमो स्कॉलर्स के व्यूज भी ऐड किए हैं. अगर याद रहे एग्जाम में तो मेंशन जरूर करना. स्कॉलर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस अमर्त्य सेन, अतुल कोहली एंड जेन ड्रिज और प्रथा Chatterjee. So they are supporting democracy for development. But यहाँ पे कुछ scholars है
who are against and the critical of democracy for development. For example, Samuel P. Huntington, then Robert Barrow, जॉन नेल्सन एंड मायरॉन विल्नर. देखो जब हम स्कॉलर्स के साथ चीजें पढ़ने लगते हैं तो ये आपको एक और चीज में हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल योर JRF एग्जाम. जैसे MA होने के बाद काफी स्टूडेंट जो है वो JRF को भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना. तो इस तरीके से जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और जब आप स्कॉलर्स को बार बार एक ही टॉपिक में देखेंगे, जैसे कि मैंने ये सेमिनल पी हंगिंगटन को कई बार डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में पढ़ाया है ना. तो इससे एक नॉलेज बिल्ड हो जाएगी कि हाँ मैंने इसको इस टॉपिक में बहुत बार पढ़ा है. तो ये JRF के एग्जाम को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प भी करेंगे. तो अब देखो अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट इज लाइक अ एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम. डेमोक्रेसी इंश्योर राइट्स ट्रांसपेरेंसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम, और डेमोक्रेसी ये प्रोवाइड भी करता है. तो इसलिए इट इज सपोर्टिंग टू द डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट. देन अतुल कोहली, he said strong democratic institutions can effectively guide development and state capacity matters more than regime type. Then other scholars you can read this. Then you see the against view. Against view is like a Samuel P. Huntington. Um, Democracy can lead to political instability. Order order is more important than participation for development. ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लीड करेगा. मतलब डेमोक्रेसी में कोई फिक्स्ड तो होते नहीं है. तो यहाँ पे जैसे इलेक्शंस होते रहते हैं, तो ये जो इलेक्शन है इट मे लीड this political instability, and order is more important than participation for development. Then Robert Barrow, he says that weak link between democracy and economic growth, and authoritarianism may grow faster initially. तो ये जो वो अथॉरिटेरियन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक वीक लिंक है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी. चलो अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स विच सपोर्ट डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट. तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स है, इसमें कोई स्कॉलर्स वगैरह नहीं, ये जनरल पॉइंट्स. ठीक है. तो जनरल पॉइंट्स लाइक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. Democratic institutions ensure the government accountable through election, media and civil society. तो जो डेमोक्रेसी है ये इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहे. और ये अकाउंटेबिलिटी किससे इंश्योर होती है, इलेक्शन, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी से. देन इंक्लूसिव ग्रोथ. पॉलिसी लाइक MG नरेगा, राइट टू एजुकेशन, है ना, and this Food Security Act, they aim at welfare of weaker sections. Then protection of rights like fundamental rights ensure social justice and human development. Then public participation like people influence policies through voting, protest and civil society activism. Now see the example like RTI Act, which is empowered citizens to question the corruption. बट एज यू नो RTI का भी कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा नहीं है आजकल. देन लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स which says that democracy slows down the development. For example, policy delay and red trap. It says that decision making is slow just because of debates, opposition and procedural. जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए ये जो है पॉलिसी डिले करते हैं और जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी डिले होता है. देन द पॉपुलिज्म एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स कि गवर्नमेंट जो है इट मे फोकसेस ऑन द शॉर्ट टर्म गेन्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स. Then the political instability, like coalition politics, may weaken decision governance. Then obstacles to big projects, protests, protest and legal hurdles delay infrastructure and industrial projects. For example, land acquisition issues delaying in industrial projects. Okay.
देन हम देखेंगे कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इंडिया एंड चाइना को थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो चाइना में जैसे हम देखेंगे अथॉरिटेरियन है ना, अथॉरिटेरियन कंट्री चाइना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, whereas in India it is very slower than or slower but more inclusive and right based development. So it debate is enhance the speed and sustainability and freedom. Now this is the middle path कि हमें क्या करना चाहिए, और you can say this is the way forward. Like democracy may be slow but stable. Development in India is gradual but inclusive, and institutions like judiciary, media, civil society ensure check and balance. Amartya Sen's view, like development is not just economic growth but also the expansion of freedom. तो आप ये वाली लाइन जरूर ऐड कर सकते हो दिस अमर्त्य सेन की. ओके, देन वी विल कंक्लूड दिस. द डिबेट इज नॉट अबाउट चूजिंग between democracy and development but about making democracy more efficient. India shows that democracy and development can go together through though with challenges. Then topic number 3, this is evolution of political democracy and economic development in India. So introduction. इंट्रोडक्शन हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे विद द नेम ऑफ स्कॉलर. तो रजनी कटोरी कोठरी सॉरी. So the political scientist Rajni Kothari, India's democratic experiment is unique. What he says that India's democratic experiment is unique because it combined universal adult franchise with socio-economic transformation from very beginning. Since independence and political democracy and economic development have evolved together, shaping India's nation building process. Now, the question is about the evolution of political democracy and economic development. So, we will cover both uh, evolution of democracy, then we will cover this economic development. So, this is evolution of democracy in India. तो हम इसको फेज वाइज अगर हम समझे लाइक 1950 टू 1967 में क्या हुआ था कि अडॉप्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 1950, विच एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, नॉट सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म को हमने ऐड किया था 1976 में, है ना. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया था. Fundamental rights became the pillar of governance. Then dominance of Indian National Congress ensured political stability. Then 67 to 90 के बीच में देखें तो यहाँ पे ये देखो, अगर हम इसके बीच में देखें तो सेकुलरिज्म को भी हमने ऐड कर लिया था. देन राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिजन पॉलिटिक्स, Indian emergency tested democratic institutions. Democratic resilience was demonstrated through the restoration of electoral politics in 1977. तो इसके अंदर हमने इमरजेंसी भी देखी थी 1975 में, है ना. देन 1990 टू 2014 में हम देखेंगे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये वाला फेज जो है ना, यहाँ पे काफी चैलेंजेस देखने को मिले थे. एक मिनट कांति से या सो इस वाले 1967 टू 1990 में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले. सिर्फ 1975 में एक तो ये इमरजेंसी फेस हो गया था, फिर 1962 में चाइना वॉर, 1962 में चाइना एंड इंडिया वॉर हो गया था, है ना. 1971 में भी बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ.
तो ऐसी चीजें हमने इस वाले फेस में देखी थी। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको दिखता है कि हाँ ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड लग रहा है, तो यू कैन मेंशन दोज पॉइंट्स आल्सो। देन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन एक्सपेंडेड सोशल जस्टिस। देन हमने देखा था कि 73rd and 74th constitutional amendments which strengthen the local self government, then increase participation of women, Dalits, OBCs, and marginalized groups. Then contemporary phase like growth of digital governance and citizen engagement, and a greater emphasis on welfare delivery through technology, and this debate on federalism, institutional autonomy, and global, sorry, democratic accountability. Then this evolution of economic development in India. For example, state-led development like 1950 to 1980 के phase की बात हो रही है, ये adoption of mixed economy and centralized planning, focus on heavy industries inspired by this Mahalanobis model. Then Green Revolution enhanced the agricultural productivity and food security. The gradual liberalization like moderate economic reforms and industrial expansion, rising physical deficits, exposed structural weakness. Then this liberal LPG जो कि 1991 टू 2004 के फेस में हम देखेंगे, तो ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था अंडर पीवी नरसिम्हा राव एज अ पीएम, एंड ही वाज like foreign affair minister, I think. Then integration with the global economy and rapid growth in service, IT, and telecommunications sector. Then inclusive and digital growth 2014 to onwards, like expansion of digital infrastructure, financial inclusion, initiatives such as GST, Make in India, Startup in India, and Digital India, focus on infrastructure, manufacturing, and welfare delivery. देन हम देखेंगे, ये देखो ये आप ऐसे फेस इसको भी एक स्ट्रक्चर के एक डायग्राम में शो कर सकते हो कि हमने देखा था डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल कंपटीशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो इन सब को मिला के क्या बनता है? responsive governance which is effective policies जो लेड करती है which is led to the economic growth such as poverty reduction, infrastructure investment, employment generation and human development. और जब हम ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं, this is become the stronger democracy or the greater participation trust legitimacy. देन द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को ऊपर पढ़ चुके हैं, इस तरीके से आप रिलेशनशिप एंड उसके चैलेंजेस को लिख सकते हो। देन दिस इज द critical assessment like India has achieved remarkable democratic continuity despite vast diversity and poverty. Then economic growth has lifted millions out of poverty, yet regional and social disparity persist. Then you can conclude. तो conclusion इस तरीके से हम कर देंगे. Now see the next topic, performance of democracy in India in last 6 decades. तो अब हमें बताना 6 decades like 60 years में इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस रही है. तो नाउ स्टार्ट लाइक रॉबर्ट द हल के हम पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजी को लिखेंगे अबाउट द democracy. So democracy is a system characterized by political participation, competition, and civil liberties. Since independence, India has sustained democratic governance despite vast social, economic, and cultural diversity, making it one of the world's most successful democratic experiments. So let's see the performance of democracy in India, like political achievement. तो हमने देखा है रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर बिटवीन द कॉम्पेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज. बट अभी हमने देखा टीएमसी जिसने अपनी पावर को ट्रांसफर करने में कितना ज़्यादा हंगामा किया था, है ना. देन हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज.
rise of regional parties, and strengthen the federal democracy, greater participation of marginalized group through reservation. Then institutional strengthen like independent judiciary protecting the constitutional values, autonomous election machinery through the Election Commission of India, growth of parliamentary committees, है ना. And then ये हमने देखा था strengthening the local self government through 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Then social transformation like political empowerment of SC ST women, है ना. अभी women का 2023 में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2023 में ऐड किया था विमेन की पार्टिसिपेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. तो दिस इज द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ women. The increased awareness of the rights and entitlements, expansion of civil society organization and social movements, greater inclusion of previously marginalized communities in democracy, in governance. Then economic and development outcomes like democratic stability facilitates the economic reforms, welfare schemes aimed at poverty reduction and social justice, improve access of education, health, and public services, and increased accountability in development through transparency laws such as RTI. Then challenges and limitations. Challenges क्या है? Electoral challenges like money power and criminalization of politics. So this is the very common and very uh, important point. This is criminalization of politics. तो हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में सारे मिनिस्टर्स क्या है? मोस्टली मिनिस्टर्स आर क्रिमिनल्स. कोई रेप के केस में जा चुका है, कोई गुंडागर्दी करते हुए जा चुका है जेल में. तो ये देखेंगे और हम देखेंगे कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको टिकट्स भी जल्दी मिल जाती है ना. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस है ये कि डेमोक्रेसी को गलत तरीके से शो किया जा रहा है ना. मनी पावर, electoral populism affecting the long term policy making, declining the quality of political debates, then governance issues, corruption, bureaucratic inefficiencies, delay in policy implementation, weak accountability, and some institutions. Then this social challenges like persistent caste, gender, and regional inequalities, communal and identity based polarization and unequal access of political influence. Then deficit democratic deficit like low internal democracy within political parties, misuse of institutions for political purposes, and concern regarding freedom of expansions and dissent. देन क्रिटिकल असेसमेंट को आप ऐड कर सकते हो और वी कैन कंक्लूड द आंसर लाइक बी आर अम्बेडकर. as noted by B.R. Ambedkar, political democracy must rest on social and economic democracy. India's democratic journey has been remarkable, but its future success depends on translating political equality into substantive social economic justice. तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कवर होता है. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल. वहाँ पे हम ये सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं. और आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.